It This can be conference cruelty, will now be recorded. and it is cruelty and harassment outside the family. So we have two categories. One is within the family, and one is outside the family. So harassment has got many connotations, but when harassment in the sense a little harassment here and there, whether it's to a man or a woman, may not really make a difference if you're just talking in terms of casually, not actually having something derogatory in mind. But when harassment is humiliating, when it is ridiculing a woman, when it is affecting her dignity, her respect, her freedom, and it is discriminatory, and it is gender biased, definitely it will come under harassment and cruelty. So if we divide crimes which are committed against women within the family, I would say that domestic violence, dowry debts, wife bride burning, any kind of humiliation that is suffered within the family, marital rape, beating, hitting, punching, taunting, kicking, driving her against the wall, hitting her head against the wall, taunting her for cooking bad food, taunting her for not producing a male child, taunting her for not producing a child at all. So all these kind of verbal behavior or physical behavior would constitute harassment or cruelty. And for this, we have Section 498A in the IPC, which covers married women when they are subject to cruelty, whether it is mental or physical, or whether it is related to dowry demand or without dowry demand. Section 498A was incorporated into the IPC in the year 1983 when it was seen that many married women were being subject to different forms of cruelty at home, and the number of bride burning, deaths had really gone up, and there was no way that it could be controlled. And because these things were happening within the four walls of the house, very little very little information went outside the home, outside the house to people, and what happened within the house was not known. So in a way to control cruelty against married women, section 498 was incorporated, and along this we also had section 304B into IPC, which deals with dowry debts, and any woman who dies in suspicious circumstances within 7 years of marriage, and it has been proved that she was being subject to cruelty for dowry just before her death, then it shall be presumed by the court that it is a dowry death. Okay, and with this, of course, changes were brought about in the Indian Evidence Act. Also, we have Section 113A, and we also have certain amendments made to the CRPC. Now, it was seen for many years that Section 498A did help, where cruelty was concerned against women, and they did get respite. But it was seen that once a woman or her relative, whether it was by marriage or by blood or by adoption or a public servant, made a complaint under Section 498A of IPC, the marriage invariably broke because it was, considered a taboo that a woman would go in the open and there would be, public mudslinging, things like that. And how could a woman come back into the family if she spoke against the husband, against her in-laws, for acts of cruelty committed against her? So this, in order to stop or to save the institution of marriage, because marriage is also a very important institution of any society, and to bring stability into society, we cannot just eliminate the institution of marriage. We also have to see at the same time that it is preserved, but not at the cost of subjugating the woman or torturing the women. So there was another way found. The Domestic Violence Act was enacted. And if I say it completely, it is Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which was enacted, and it came into existence after it was passed by the Parliament. This enactment gives a civil law remedy, whereas Section 498A gives a tool in the hands of the police to immediately arrest the husband or the relatives or threaten arrest. And under Domestic Violence Act, this threat is not there.
because under Section 498A, it's a cognizable offense and non-bailable. All right. So, and it cannot, and it is not compoundable also. Whereas under the Domestic Violence Act, the woman who suffers violence or torture or cruelty, whether it is of a sexual kind or it is of a physical kind, whether it is verbal, whether it is emotional, whether it is economic, she can actually file a complaint under this act and go before a magistrate seeking a protection order. If she herself cannot go, then somebody else on her behalf can go. Maybe she's not in a position to go. So this particular enactment gives a civil law remedy, which means that the family, the marriage is preserved. The man is not arrested. Okay, the man is not jailed. Neither are the relatives of the man or the husband jailed. So it is a step which is better than Section 498A. So in this respect, harassment, whether it is physical or mental, would be tackled under the Domestic Violence Act, and there are different kind of orders which are passed under the Act, be it a protection order, be it a residence order, because earlier, when proceedings of divorce were initiated, the woman, because of cruelty, had to go to her parents' house. And very often, the parents, especially in low middle class families, would not accept the daughter back. So she had nowhere to go. All right. But in such a situation, if an action or a petition is moved under the Domestic Violence Act, she gets a residence order, which means that she will not be out on streets. She has a right to residence, a right to shelter, which is a very important right for her, so that she would not become a destitute. She can also ask for maintenance from her husband, the kind of maintenance or the kind of standard of living that she was enjoying with the husband. This can also be for the children. So, in that context, violence within the family or cruelty within the family has been taken care of to a large extent under the Domestic Violence Act. Because not only the residence order can be passed, there's a protection order which would prevent the husband from committing acts of violence against the woman. And she can also be given a separate part in a house to live over there so that the fighting partners are away from each other and they do not come into each other's way. More so, if it's a small house, the woman can be given a house on rent or a place on rent, and the rent has to be paid by the husband. And or the man can also be asked to move out of the house and stay in another place. But anyway, facts and circumstances of each case, would determine the decision which has to be given by the magistrate. But along with the residence order, or we have the protection order, we also have a monetary relief order where maintenance can be sought for herself and the children. And then we also have the custody, temporary custody order of the children, so that the children do not get a shock and they are removed from the custody of the mother. The mother continues to have the custody till the case reaches a logical conclusion or it is decided. So we do have many remedies available within the family for such acts of violence, conduct committed against the woman. Outside, outside the family, then we have, of course, many provisions under the IPC. We have Section 354, which takes care of, wherever it is outreaching the modesty of a woman, or we have Section 354A of the IPC, which talks about sexual harassment not connected with workplace environment, but otherwise also. We have other sections, Section 294, Section 509. We have these sections to take care of the woman. And then apart from this, we also have the Sexual Harassment at Workplace Act, which protects women from being exploited in the workplace, where the woman is ridiculed and her dignity is compromised and she's not allowed to work and develop equity at the workplace. We have a specific legislation covering that also. So harassment is basically discriminatory behavior. You understand? It is a gender bias and it comes from years of gender discrimination committed against women and being carried forward to date. So we can say that it is embedded in the patriarchal mindset of the society.
when a woman comes to work and somebody whistles at her, again, that is considered harassment. Nobody can just whistle at you if you are coming and working. Complimenting without being, without causing harassment to a woman is a different matter altogether. Or recognizing her work at the workplace is not harassment. But where you are taunting her, you're telling her, oh, this work you will not be able to do because you're a woman. Oh, because you're a married woman, you've got children, you've got responsibility, you would not be able to carry out this work. So it's better if you don't take it up. So these things also have sexual connotation where the worth of a woman is always undermined. Whereas we have Constitution of India, which talks about equality, which talks about respect of dignity of a woman, respect of freedom of women. So such talks cannot be accepted, are not admissible today when all of us are equal. Very rightly said. Thank you. Now, Thank you so much, Manjula ma'am, for such a beautiful overview of all the laws relating to the aspects related to women. Now over to Shamla ma'am, a warm welcome. And I directly put a question to you. And my question to you is that if somebody is complaining to NCW in terms of a domestic violence happening with a woman, how would NCW take cognizance of the said complaint and what are the steps thereafter? Shamla ma'am, you'll have to unmute yourself. You're not audible, ma'am. Kindly unmute yourself. Ma'am, you are not audible. Kindly unmute yourself. Ma'am, you are not audible. Yes. Namaste. Yes, ma'am, you're not. Abhi Yes, sun rahe? Yes. Okay. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. When we receive DV cases, first we try to listen and understand the situation of the victim and seek victims, decide whether she would want to file a police report or want a mediation or the counseling in the matter, and then accordingly we proceed. In DV cases, we help victims register their complaint with police. Then, in coordination with police, we also arrange for their rehabilitation or excuse them for the abuser's house for the safety. Third, if she has been thrown out from her matrimonial house and wants to return back to her matrimonial home, we help them to enter in the house of her in-laws, again with the help of police. The victim has a right to residence in her matrimonial house as per the Indian law laid down by the Supreme Court. Ma'am, in case we see when complainants visit the police stations and there is no complaint received by the police, if in such cases victims approach NCW in order to get their complaints lodged with the police, how NCW helps with the same? Then पहले वो अपना NCW में अप्रोच करेगी, तभी हम लोग उसको तो डायरेक्टली हम लोग उसको कॉल करेगा और पुलिस से उसको ऐसा उसको हेल्प मिल गया या नहीं मिल गया, हम लोग डायरेक्टली एसपी को कॉल करते हैं. तो फिर एनसीडब्ल्यू से एक बार कॉल करेगा, अपना मेंबर और काउंसिलर के थ्रू कॉल करने के बाद इमीडिएटली, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, इतना सारे केसेस कोविड टाइम में मैंने तो रिसीव किया है, डायरेक्टली हम लोग ही एसपी को फोन किया, तुरंत एक्शन भी ले लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गया. ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू के थ्रू हम लोग फोन करेगा ना, पुलिस भी अलर्ट हो जाएगा, उनको पता है, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे कोविड टाइम में तो बहुत सारे केसेस डायरेक्टली कॉल करके किया था. मैम, और जो आपने अभी काउंसलिंग के बारे में बताया कि आप ऑप्शन आप विक्टिम से कि आप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं या पुलिस एक्शन चाहते हैं, तो जिन केसेस में मैम काउंसलिंग और मीडिएशन सेशंस एनसीडब्ल्यू कंडक्ट करता है, वो आपके एक्सपीरियंस में कितने सक्सेसफुल होते हैं और किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस की जाती है एनसीडब्ल्यू में?
NCW में difference between mediation and the counseling is the when we mediate, we listen to both the parties and help them at arriving a conclusions. काउंसलिंग तो ऐसा करता है, हम लोग NCW के थ्रू लेटर लिखते हैं, तभी पुलिस ऑफिसर और कौन कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, सबको NCW में बुला के हियरिंग करता है हम। अभी इस कोविड टाइम पे तो हम लोग ऑनलाइन हियरिंग करके प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, लेकिन जो हम लोग डायरेक्टली बात करेगा फेस टू फेस वी आर डिस्कसिंग नो इज ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी फोन पे भी करेगा तो अभी इस बार में तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन थ्रू हम लोग हियरिंग कर रहे हैं। और हियरिंग करने के बाद वी आर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड टू पुलिस, क्योंकि अपना पास तो वुमेन इसलिए आता है, न्याय मांग कर आती है, उसको तो जस्टिस मिलना चाहिए। ये जस्टिस के लिए NCW 24/7 हम लोग फुल टाइम रख कर काम कर रहा है। और मेरे को लग रहा है मेरा तो हम लोग को अभी इतना केसेस तो हियरिंग किया, एक बार ऐसा भी होता है कभी कभी लॉ का मिसयूज भी कभी कभी होता है, लेकिन हम लोग उसको समझ कर देखिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ का केस है तो और उसका ससुराल वाल का केस है तो सबको बुलाना पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी विमेन भी स्ट्रांग बनना पड़ता है, कभी कभी इधर लॉ का मिसयूज भी हो रहा है। ये ध्यान में रखकर हम लोग दो लोग का भी हियरिंग करते हैं, तभी हमको पता चलता है कौन गलत है कौन ठीक है। लेकिन NCW तो वुमेन का सब वुमेन क्या चाहती है उसको जस्टिस मिलने के लिए हम लोग पूरा तरफ से कोशिश कर रहे हैं। Then, ma'am, next question to you would be the way Manjula ma'am had explained how sexual harassment at work, there is a particular and everything. When a complaint of such sexual harassment at workplace is received by NCW, what is the action taken against such company and the officers engaged in such company? अभी NCW का थ्रू वो लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट में तो कंप्लेंट करेगी तो पहले हम लोग कंपनी को लेटर लिखते हैं और एक बार हियरिंग भी करते हैं, क्योंकि इसमें तो कंपनी का थ्रू वो केस फाइल करेगी, तभी तो ये भी पता चलना पड़ेगा वो ठीक है या नहीं है। सब लोग को उधर बुलाकर हम लोग हियरिंग करने का बाद ही पता चलता है। कभी कभी ये भी लगता है कंप्लेंट करने वाली तो कभी कभी कंपनी का ऊपर प्रमोशन नहीं मिल गया ऐसा झूठ इल्जाम लगाकर भी कभी कभी कंप्लेंट भी करता है, तभी हम लोग कंपनी का थ्रू कंपनी का कौन हेड है उनको बुलाकर ICC कमेटी है ना, हर एक इसमें संस्था में ICC कमेटी होता है, ICC कमेटी का रिपोर्ट मांगकर फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑल्सो मैम, अभी लॉकडाउन में कोविड के दौरान NCW ने एक बहुत बढ़िया DV ग्रुप बनाया था जिसकी सब लोगों ने ट्विटर पे बात की और सब जगह बात करी, तो आपके एक्सपीरियंस में मैम वो कितना सक्सेस रहा और कितने केसेस आपने उसके अंदर डील करे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी हम लोग तो NCW का थ्रू DV केसेस में तो बहुत सारे कंप्लेंट रिसीव किया है। कोविड का इस टाइम में है ना, बहुत सारे केसेस तो रिसीव किया है। एज वी रिसीव द कॉल अबाउट इन NGOs, पुलिस से सबसे हम लोग कॉल करके तुरंत उसके लिए भी एक्शन भी ले लिया है। अपना DV केस में तो हम लोग इतना तो ज्यादा से ज्यादा ये कोविड टाइम में ज्यादा से ज्यादा कि हम लोग केस रिसीव किया है, दूसरा टाइम में तो केसेस कम होता है, क्योंकि घर में तो सब लोग अभी आपस में सब फैमिली एक साथ जुट कर टाइम बिताता है तो प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। कभी कभी एक तो कोविड टाइम मेरे को लगता है एक अच्छी बात ये है कि एक और दूसरे को समझने के लिए एक टाइम भी है, लेकिन कभी कभी एक और दूसरे को समझ में नहीं सकता है, तभी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसमें दोनों भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और इस कोविड टाइम में तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन थ्रू भी हियरिंग किया है और मेरे को लगता है सबसे फैमिली का पूरा मेंबर एक साथ बैठकर अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व किया है, ये भी है, क्योंकि सब एकजुट कर मिलता है ना। पहले तो इतना होता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, बाहर जाते थे, एक का पास बात करने की भी टाइम नहीं है, बच्चे का साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनका पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऑफिस का काम सिर पे आता है, वो भी थोड़ा ज्यादा उसका भी गुस्सा आता है इसलिए। लेकिन इस टाइम पे है ना, कोविड का इस टाइम पे मेरे को लगता है हस्बैंड एंड वाइफ अपना तो बात शेयर करने के लिए एक टाइम भी मिल गया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ऑल्सो मैम, NCW के अंदर जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि आप NRI कंप्लेंट्स को भी एंटरटेन करते हैं, तो अगर कोई NRI कंप्लेंट आती
एनसीडब्ल्यू से रिसीव करता है तो उसके अंदर किस तरीके से प्रोसीडिंग रहती है? अपना एनसीडब्ल्यू में एनआरआई एक अलग ही सेल है। इसमें तो एनआरआई थ्रू का कंप्लेंट आता है ना, तभी अपना ए सेल पूरा उसके लिए काम कर रहा है। अगर डीवी का तो सेपरेट काम हो रहा है, अगर एनआरआई सेल का तो वही काम होता है। इसमें तो ये भी होता है कभी कभी ये ना शादी ऐसा होता है, नहीं पता था, हस्बैंड तो अब्रॉड पे रहता है, शादी होता है, बाद में इधर लड़की को छोड़ के वो उधर काम करता है, बाद में पता चलता है उधर एक उसको दूसरा शादी हो गया। ये भी अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपना पास इतना सारा कंप्लेंट भी आता है ना, तभी उधर शादी करता है, इधर वो पता नहीं है, किसी को भी नहीं बताता है, लेकिन अपना मम्मी पापा का प्रेशर के लिए इधर शादी करता है। करने के बाद प्रॉब्लम पता चलता है, लड़की को नहीं लेके जाता है, तभी इधर लड़की सफर होती है। तो दूसरा एक लड़की तो उसका पास है, दूसरा लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया है, ये उनका गलती है ना। इसीलिए भी इसके लिए भी हम लोग एनआरआई सेल में अच्छे से काम कर रहे हैं, और हियरिंग भी हम लोग करके सक्सेस भी हो रहा है। ऑल्सो मैम, अगर किसी को शेल्टर होम प्रोवाइड कराना होता है तो उसके अंदर किस तरीके से एनसीडब्ल्यू प्रोसीड कर पाता है? अगर किसी को शेल्टर होम की जरूरत है, किसी को इमीडिएटली उसके मैट्रिमोनियल हाउस से अगर रेस्क्यू करने की जरूरत है, तो उसमें एनसीडब्ल्यू किस तरीके से काम करता है? आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में सखी वन स्टॉप सेंटर है। अपना गवर्नमेंट का थ्रू सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया है। उधर हर एक औरत को इतना ये सब मेडिकल फैसिलिटी, लीगल फैसिलिटी, शेल्टर फैसिलिटी और पूरा फैसिलिटी उधर एक छत में तो फैसिलिटी मिलता है। तभी हम लोग तो वन स्टॉप सेंटर को कॉल करेगा, इस वर्किंग अंडर द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें तो काम कर रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये जरूरत है वन स्टॉप सेंटर में इतना सारा तो ये सब फैसिलिटी मिलता है, ये तो हम लोगों को बताना है, क्योंकि ग्राम तक पहुंचना है। वन स्टॉप सेंटर में इतना सब फैसिलिटी है, और उधर रहने के लिए शेल्टर होम का फैसिलिटी भी है, और उधर उसको लीगल भी एडवाइस कर सकता है, मेडिकल हेल्प दे सकता है, पुलिस के थ्रू उसको क्या हेल्प चाहिए वो सब उधर वन स्टॉप सेंटर में मिलता है। और हम लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट का वन स्टॉप सेंटर में कॉल करेगा, उधर स्टाफ भी है, हमारे काउंसलिंग करने के लिए भी है, एक स्टाफ भी है। इतना स्टाफ तो पूरा विमेन के लिए उधर काम करते हैं। डायरेक्टली हम लोग अप्रोच करेगा तो हम लोग डायरेक्टली, ये तो सबको मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर मोदी गवर्नमेंट में किया था, और इसका थ्रू हर बहुत सारे विमेन के लिए हेल्प हो गया। और हमारा विजिट का टाइम, हम लोग भी दूसरा स्टेट विजिट करता है, तभी वन स्टॉप सेंटर का खुद विजिट हम लोग भी किया, क्योंकि अपने तो आपस में फोन पे करता है, ये हो रहा है मैम, ये हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन हम लोग खुद उधर विजिट करेगा, स्पॉट विजिट करेगा, तभी तो पता चलता है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो नॉर्थ में भी किया था, साउथ में भी किया था, लेकिन फैसिलिटी तो एक ही होता है, एक ही छत पे तो पूरा फैसिलिटी विमेन को मिलता है। और अपना हिम्मत बढ़ाने के लिए एक अच्छा वन स्टॉप सेंटर, नाम ही ऐसा है सखी। सखी मीन फ्रेंड, क्योंकि अगर किसी लड़की को कुछ हो गया, पहले वो किससे बताती है? अपना फ्रेंड से बताती है। सखी वन स्टॉप सेंटर में भी ऐसे ही है, पूरा फैसिलिटी उसको मिलता है। इतना तक है, हम लोग उधर रजिस्टर्ड बुक देखेगा तभी पता चलता है एक औरत कब वो इधर आ गई और उसको क्या फैसिलिटी मिल गया, और उसने एंड में है ना उसको किधर पहुंचा है, सिर्फ उधर आने का नहीं, उसको किधर छोड़ने का है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सखी वन स्टॉप का हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई है, और आई थिंक कि अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे लोगों को जब अवेयरनेस ही नहीं है चीजों के बारे में, वो लॉ को रिजॉर्ट करते हैं, और लॉ को जिस तरीके से सबको पता है कि थोड़ा वक्त लगता है प्रोसेस करने में, और जो चीजें फ्री सर्विसेज हैं और जैसे अर्जेंट हेल्प चाहिए तो एनसीडब्ल्यू को अप्रोच करें और वो तुरंत पुलिस से एक्शन करवाएंगे, ये सारी चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो एनसीडब्ल्यू अवेयरनेस के लिए किस तरीके से काम करता है मैम? कितनी अवेयरनेस ड्राइव्स या क्या अवेयरनेस के लिए एनसीडब्ल्यू करता है? एनसीडब्ल्यू में अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग कर चुका है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उधर बहुत सारे टीन एज विमेन है ना, टीन एज गर्ल है, उनको ज्यादा हम लोग अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ गलत हो रहा है तो इस टीन एज पे होता है, उनको सही मार्गदर्शन चाहिए, तो उधर उनका तो अवेयरनेस एक बार हो गया। और अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लॉज है
वो भी बताना पड़ेगा। ये भी हम यूनिवर्सिटी का थ्रू कर रहे हैं और बहुत सारे अभी कर रहे हैं। और अभी इस कोविड टाइम पे ऑनलाइन पे वेबिनार थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम भी ऐसे ही कर रहे हैं। और कॉलेज का तो एक तो हो गया, फिर एनजीओ का थ्रू वो भी हम लोग कर रहे हैं, एनसीडब्ल्यू का थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इतना तो है। अभी छोटा स्कूल, प्राइमरी स्कूल में तो छोटी बच्चे के लिए गुड टच, बैड टच, ये सब क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरा साथ गलत हो रहा है। अगर एक बार लड़की को पता होता है ये ऐसा करेगा तो ये गलत है, उसको मन में तो स्कूल में ये तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में गुड टच, बैड टच, और हाई स्कूल में तो उसको कैसा रहना है, किधर बाहर जाने का टाइम तुरंत किसको फोन करना है। और कभी भी अभी क्या है ना, सबका पास तो मोबाइल ही है, सब लड़कियां मोबाइल तो यूज करता है। लेकिन मोबाइल का मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ, इसका यूज भी हो रहा है और मिस यूज भी हो रहा है। मोबाइल का थ्रू अच्छी भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। लेकिन अच्छी काम के लिए कैसा यूज करना है वो हम बताना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अभी इस साल साइबर क्राइम ये कंप्लेंट ज्यादा रिसीव किया है। ये सब हो रहा है, ये मोबाइल का थ्रू हो रहा है। अभी मोबाइल का इस्तेमाल कैसा करना है, बाद में इतना तो होता है। लास्ट मेरे पास भी एक ऐसा केस आ गया, मैं याद करना चाहती हूँ। साइबर क्राइम का थ्रू, मोबाइल का थ्रू फ्रेंडशिप हो गया, बाद में फोटो तो फेसबुक पे डाला, बाद में हमारा पास वो कंप्लेंट आते हैं। कभी कभी लड़कियां तो कंप्लेंट फाइल करने के लिए डर लगता है, बाद में उस लास्टली वो क्या स्टेप्स देती है पता है आपको? सुसाइड का मार्ग। ये तो गलत है, उसको पता होना चाहिए। अगर मेरा साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे पास लॉ है, मैं पुलिस के थ्रू जाऊंगी, अगर एनसीडब्ल्यू के थ्रू जाऊंगी, नहीं तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का साथ में जाऊंगी। मेरा साथ तो कुछ है, वो बताना चाहिए, वो अवेयरनेस देना हमारा कर्तव्य है। Ma'am, now I would ask Manjula ma'am that in terms of maintenance, to the best of my knowledge, I don't think that NCW is competent enough to provide maintenance. So I would want you to elaborate upon the laws relating to maintenance for women. And further, Divyansh would proceed with the subject. Okay. As Shyamala ma'am has clearly highlighted, that there has been a boom in the complaints of domestic violence in this corona lockdown, because there were a lot of quarrels in the family. So what do you have to say about the laws regarding domestic violence, and how were the remedies provided to women when in this lockdown the domestic violence was taking place specifically? The Act itself has many remedies, isn't it? Regarding maintenance, or you want remedies straight away? I mean, in totality. There are various remedies. Both the questions. Yes. Like, if there is violence committed, there's a protection order, protection officer will come. I mean, protection officer will make a report, give it to the magistrate, and the magistrate will pass an order. Protection order can be having a number of other, directives also for the protection of the women. Assets can be protected, and bank accounts can be protected, and they can, an order can say that a woman's, bank account should not be sealed at all. Man's bank account can be sealed if it's a joint account, so that he doesn't draw money without the knowledge of the magistrate concerned. Because these things happen in matrimonial homes, when violence is committed and a complaint is lodged, then the husbands try to take away the money and the material things, so that the woman is denied all the rights. But regarding maintenance, of course, the woman, as I told you, will apply for monetary relief, and the maintenance that she can claim would be interim, and it can be for monthly also installments. For example, the way she's been living in that particular house, the standard of living, her daily requirements, basic needs, not only for herself but for her children also. So much so that if there is no order being passed here, she can also seek maintenance under Section 125 of the Criminal Procedure Code. That does not bar her right to move. Petition under Section 125 CRPC also. But then when the immediate requirement is there, where violence is committed against women, and she moves the Domestic Violence Act under various provisions, then monetary relief can be given. Apart from this, she can also seek compensation. When violence is committed against the women, it could be visible torture, visible signs of violence, or it could be anguish, pain. The woman is being tormented, and it's a shock for her. Because I can tell you cases where even in affluent families,
men, husbands have been beating their wives, okay? And there was a case which I had mentioned in my eight cases on crimes against women within the family. This couple knew each other very well before they got married. And after marriage, after a few days, uh, the woman, the husband and the wife had to go and join the family for dinner in another room. And they had an argument in the room, and the woman got a slap, the husband hit her, and she was in a state of shock. And both of them had very good jobs, government jobs. And she looked at him with absolutely shock in her eyes and wondering, is this the same person I knew when I was dating him, or knew him when I was unmarried and used to meet every day in the university? So this is something which is, not expected. And when it happens to a woman and she's not expecting it, the trauma is acute. So under the Protection of Domestic Violence Act, we can ask for compensation for the trauma and the pain that she has gone through where there is violence committed against her within the family. This would be apart from other right to maintenance that would be under the Hindu Marriage Act or the Hindu Adoption and Maintenance Act. I'm not talking about that because those issues would come if she's seeking divorce or she's seeking maintenance outside violence, and there are different issues. What if the husband is trying to evade paying maintenance? So what's the remedy available to the women in case the husband is trying to evade paying the maintenance? If he evades, the court would want the statement of his, salary account, income tax account, bank account. There are ways and means in which the court can always, invoke the truth, take out the truth from the man. There are many ways now, and the counsel can always help. It is difficult to hide, especially to hide anything these days, especially when, things are very transparent online. It's not as easy as it used to be earlier. So in any case, the truth will come out. It cannot be hidden. Yes. Now, the next question I would like to address is that how does the universally acknowledged principle of right to live with dignity and respect apply to the women in India? In the context of India, how do you feel that this principle can be applied? And is it in the real sense? Look, Article 21 talks about right to life and personal liberty. And the Supreme Court and High Courts have invariably read in many decisions when they've been dealing with Article 21 regarding its application to women-related issues, that right to live with dignity and right to live with freedom without humiliation and without discrimination are essential components of Article 21 of the Constitution. Now, India has ratified many international conventions and instruments, whether we talk about the Universal Declaration of Human Rights, we talk about the Universal Charter, the rights written in the Charter, whether we talk about the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Socio and Economic Rights. We have ratified all these rights, okay, all these conventions. And then we also have CEDAW, the Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. Our country has ratified it. And it is an obligation under the Constitution of India on the state to see that we implement the ideals and the values and the rights recognized under these international conventions through the municipal law in our country. That is why we've got the Constitution of India, we have the fundamental rights, we've got Article 14, which talks about equality, we have Article 15, which prohibits discrimination on the ground of sex, caste, race, creed, place of birth, etc. And then we have Article 21, we have Article 19 also. Now, when we talk about the principle of right to live with dignity, okay, it is incorporated in Article 21. Whether you talk about, judgments which the courts have given regarding violence committed against women within the family or outside the family, whether she's working at a workplace or she's at home. So she has to have a dignified life. She's not a woman who has to be subjugated today. For years, for more than 100 years, even more than 100 years,
We talk about, post-Vedic period, even during the Vedic period. We talk about the British period. We talk about the Muslim period. We talk about the freedom movement, which was there for making India independent. And even today, we see that in principle, we have not got this right. Okay? It is still on paper. I agree with you that this judiciary has played a very important role in giving us many intangible rights, okay, to women. Recently, a very good judgment was written by the Supreme Court of India where they said that, when a girl is a Kopasana, it doesn't matter that when the amendment was brought about in the Hindu Succession Act in the year 2006, that her father was not alive or things like that. But even then, she is a Kopasana and she has a right to ancestral property. So we have these very progressive judgments being written by the judges of the Supreme Court, and I really appreciate that. But apart from the decisions, what we see at the grassroots level, at the ground level, the dignity that should be coming to the woman is still not coming, because the woman is not looked upon as an equal. So, we do not talk about equality in terms of mathematical equality. We want equality as substantive equality. Like suppose I'm working as dean of a central university. I would want to be respected as a woman who can make decisions, and a woman who is well educated, as a woman who makes suggestions, and her suggestions and recommendations should be respected. You get my point? But we lose out somewhere where in top positions, even if a woman is educated, she's not given that post or that dignity or that respect. There is no woman who has been the Chief Justice of India yet. And we see, that many years will still pass before we have a woman who can be the Chief Justice of India. So what I feel is that the participation of women in all walks of life should increase in number, and women as such should be recognized for their worth. They should be encouraged to come forward. They should be encouraged to be in a violence-free atmosphere, and whatever they do, even participation and decision making at the political level, I think it is important for women to be participating, and at least their views and opinions would matter in running a good governance of the country. Because I feel a woman by nature, I said it earlier also, is a woman who would like to bind people together. She's constructive in her outlook. She produces life. She creates life. So when she creates life, she would see to it that life is not destroyed, and her decisions would make a difference in any policy matter that is taken by the government. And the larger the number of women who participate, I think our country would progress better, and we would say, yes, we've got equality, which we can define as substantive equality, and not equality just in numbers. That is what we really require these days. Thank you so much for your insights, ma'am. And frankly, I do believe that soon we'll have a female Chief Justice in India. And you talked a lot about and duly acknowledged the fact that judiciary has taken care of the women's rights and the position of women in the society. So what would you like to say about the Stridhan, specifically the rights regarding Stridhan, and whether how does it ensure the protection to the women? And are there any specific laws dealing with Stridhan specifically? Yeah. Istridhan, when we look at the word Istridhan, Istri woman, dhan which would belong to her. So Istridhan should exclusively belong to the woman, to the married woman. Do you get my point? Like it would be solely her property, whether it is movable or immovable. And it is different from dowry. Dowry in any case is not allowed. Do you understand? So when a problem comes for the recovery of Istridhan by a married woman, firstly, it will be dealt with under Section 14 of the Hindu Succession Act. And then we also have Section 405 and 406, 405 deals with criminal breach of trust, where she gets married and she takes her Istridhan at the time of marriage when she gets gifts. Or before her marriage also, she gets gifts through relatives, friends, any known person. And even after marriage, when, she gets gifts, or she's also
created a fund out of her own earnings. That would also constitute her sole earnings, and she has exclusive right over that. So now, when a question of recovering Istri Dhan comes to the forefront, what happens is that her Istri Dhan, in the nature of money, gifts, or properties, immovable or movable, could be in the hands of the husband or in the care of the in-laws. Now they are trustees. So when she wants that Istri Dhan, they must give it to her. They cannot misappropriate it or convert it into some other form. Even if they convert it into some other form for needs of the family, but when she demands or she requests for Istri Dhan, she has to get it back. It's her right, and that right cannot be denied to her. Otherwise, she will go to the court to recover it. And if she can't recover it through the provisions which are there, under CRPC or other laws, she can also recover it under the Domestic Violence Act when she wants a protection order against violence which is committed against her, which is issued to the husband or any relative of the husband, and she can also demand for Istri Dhan at that particular moment. But Istri Dhan is something which she has a right over, but you cannot confuse it with dowry. Dowry would be totally different. Okay, dowry is illegal. Okay, giving or taking of dowry. The parents shouldn't give dowry also, neither should dowry be demanded. But because it is the fashion in our society, because it is a status symbol, the parents of the girls keep on giving, they say, okay, it is the nature of gifts, but it is actually dowry. And that has to be stopped in our country. Because under the garb of dowry, under the garb of, Istri Dhan or gifts, dowry is given to the boys' side. And this has to be seen read in between the lines. It's very important because the menace of dowry has not stopped and it has increased. And I'm very happy during the lockdown period. I feel the couples who are getting married now, and especially people are not coming, and there is guest control order. Also, I think it's something very good which is happening, and these things should be taken care of even after COVID period. That only few people should be called, and less amount should be spent on marriages. Because again, I feel it is futile, and we don't have to make a pomp and show of marriage. Marriage is something very different, and with few people also, a marriage can happen with dignity. That is what I feel. Now I would like to put the same question to Shamla ma'am. Shamla ma'am, if you in NCW are receiving a complaint in order to the recovery of Istri Dhan, as beautifully explained by Manjula ma'am, what all constitutes to Istri Dhan, she's exclusively explained that, okay, this is Istri Dhan and this is not. So if a complaint has come up to NCW, then how would NCW be helping the complainants? I think there is some technical glitch. Hello? Yeah. Are you hearing? Are you hearing? Yes, ma'am. But can't see you. Yes, Manjula ma'am is already clearly told. अपना तो देखिए श्री धन और डाउरी इतना डिफरेंस है. डाउरी है तो डिमांड करना है, अगर डिमांड करके ये चाहिए वो चाहिए ऐसा लालच में आता है. लेकिन श्री धन तो अपना आप खुशी से देना है. अगर देखिए अपना बेटी को हम लोग खुशी से कितना भी दे सकते हैं, वो इतना तो फर्क है. लेकिन एनसीडब्ल्यू ने हमारे पास तो ये श्रीधन, इसका डाउरी हेरेसमेंट का केसेस तो बहुत सारे आते थे. लेकिन ये श्रीधन अपने मर्जी से माँ बाप देगा तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये तो मिसयूज भी हो रहा है. पहले तो अपने इच्छे से देता है, शादी का बाद वो लोग डिमांड कर रहे हैं. ये डिफरेंट हो रहा है. डिमांड करने के बाद अपना एनसीडब्ल्यू में केस फाइल करते हैं. शादी से पहले उसको पता है, बाद में तो वो लोग डिमांड करते हैं, तभी वो तो डाउरी हेरेसमेंट केस लगाते हैं. इसमें तो क्लियरली हम लोग हियरिंग करने का बाद ही पता चलता है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है तो कुछ नहीं होता है. अगर थोड़ा भी रिलेशनशिप उनका बीच में तो अच्छा नहीं है तो तभी तो ये तो ऐसा ही वो लोग केस दर्जा करता है. हियरिंग का बाद तो क्लियरली हमको पता चलता है, हम लोग क्लियर करते हैं. लेकिन मेरे को ये लगता है हम लोग अपना संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ता तत्र देवताः ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अपनी औरत के लिए इतना इज्जत दे रहे. ये तो सिर्फ भारत में हमको मिलता है, दूसरा कंट्री में नहीं मिलता है. और शादी का ये रिवाज अपना इंडिया तो इतना मेंटेन कर रहे थे,
क्योंकि देखिए इधर तो शादी होने के बाद 25 इयर्स का सिल्वर जुबली, उसका बाद 50 इयर्स का गोल्डन जुबली बनाता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में आप देखिए सिल्वर जुबली छोड़ दीजिए, एक नहीं होगा तो 25 इयर्स में हस्बैंड को कितना वाइफ होता है, 4-5 होता है, वाइफ को हस्बैंड कितना होता है, 4-5 होता है। ये तो उनका रिवाज है। अपना कल्चर, अपना संस्कृति और संस्कार से अपना देश तो बड़ा है, इसीलिए हम सबको गर्व है भारत में इतना संस्कृति और संस्कार भी है। इसीलिए हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है, इसीलिए एक योजना भी जारी किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका थ्रू हम लोग लड़की को शिक्षण भी दे रहे हैं। लड़की को शिक्षण देने के बाद उनको पैर में वो खड़ी होकर समाज में एक श्रेष्ठ पोस्ट में भी बनना चाहिए। अभी देखिए आजकल लड़कियां पूरा पोस्ट में है, अभी जमीन पे देखिए, आकाश में देखिए, समुद्र पे देखिए, अपना तो पूरा इसमें तो मेन का इक्वल वो काम करती है। लेकिन कभी कभी मेरे को मैं एक बताना चाहती हूँ, मैं तमिलनाडु में पुलिस ऑफिसर से एक मीटिंग ले रही थी। उस अटेंडेंस बुक में वो लोग WPF लिखा। मैंने बोला ये क्या है, विमेन पुलिस ऑफिसर। मैंने बोला आप ये हटा दीजिए, विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप भी पुलिस ऑफिसर है, इसमें को क्यों तारतम्य बनाता है? आप मेन कैसे काम करते हैं ऐसे ही विमेन भी काम करता है। इसीलिए इस काम पे भी कभी भी हम लोग डिफरेंस नहीं देखना है, काम तो बराबर होता है, जिम्मेदारी भी बराबर होता है। और औरत देखिए बाहर भी काम इतना ही करती है। अगर एक विमेन पुलिस ऑफिसर अपना काम इतना अच्छे से कर रहा है ऑफिस में, और घर में भी इतना अच्छा काम करके अपना संसार भी निभा रहे हैं, ये तो विमेन के लिए भगवान ने दे दिया तो एक और शक्ति है। ये मैं बोलना चाहती हूँ। अपना आत्मनिर्भर भारत का थ्रू हम सबको फिर एक बार ये भारत के लिए काम करना पड़ेगा। और फिर से मैं एक बार ये कहती हूँ, एक तो बात था पहले, अगर हम लोग एक लड़की को पढ़ाएगा, गांव में एक स्कूल खोलने का हमका ये मिलेगा, स्कूल खोलने का क्रेडिट मिलेगा। इसीलिए लड़की को पढ़ा दीजिए, लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन में सब ग्राम ग्राम तक पहुंचना हमारा काम होता है। और फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना टाइम भी हो गया। हम लोग कभी भी नहीं सोचते थे एक बार ऐसा ऑनलाइन थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू हाँ हम लोग अगर दिल्ली से हम लोग एक गांव तक पहुंच सकते हैं। ये हो रहा है अपना डिजिटल इंडिया का थ्रू। अपना मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हम सबको डिजिटल इंडिया का थ्रू ये सब काम होने को दे रहे। लेकिन एक बार ये कोरोना, ये तो महामारी सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरा प्रपंच के लिए आया है। जल्दी से जल्दी हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे, जल्दी से जल्द इस प्रॉब्लम में हम लोग बाहर आएगा तो फिर हमारा काम तो करेगा, फील्ड वर्क करेगा, फिर आत्मनिर्भर भारत का थ्रू अपना विमेन एंड और मेन के लिए, क्योंकि एक रथ में 2 चक्र होता है, उसमें कोई मेन और विमेन इक्वल है, कोई तो आगे नहीं है कोई तो पीछे नहीं है, 2 चक्र ठीक से चलेगा तो रथ तो आगे बढ़ेगा। ये देखकर मैं ये समय देने के लिए आप सबको फिर मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। मंजुला मैम, बहुत खुश हो गया आपका बात सुनकर, और आपका नाम तो मैं सुन लिया। अभी डायरेक्टली नेक्स्ट तो वी विल मीट। यस यस, एक आपसे बात कर रही थी, सेक्शन 405 बोला था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ 406 है, रिकवरिंग स्त्री धन, वो IPC में है। ओके, हाँ वो इंडियन पीनल कोड का। यस यस यस, ओके, या अच्छा लगा आपसे बात करके। जा रहे हैं मैम? यस यस यस, मैं तो कर्नाटक से हूँ। हाँ, अभी NCW का। वेरी नाइस टू मीट यू। ओके, थैंक यू मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी और दिव्यांश, आप अच्छे से ऑनलाइन थ्रू ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवेयर करेंगे, यही काम होगा इस टाइम पे हमारा। थैंक यू मैम, आपने जितनी पॉजिटिव बातें करी, और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो भी मासेस तक पहुंचे और लोगों को हम अवेयर कर पाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड ऑल द पॉजिटिव थॉट्स दैट यू शेयर्ड। ओके, Manjula ma'am, can we address the participants' questions now? अच्छा, we've got questions. Okay. The first question is that the COVID-19 has had a great impact on the family structure. So do you feel that this family structure has been affected for good or for bad?
look, it depends. In some families, there was an opportunity to, improve the bonding amongst the members of the families, where people never stayed at home. That it's for the good and the worst. Both things have happened. But in some families where, the members went out and worked, and they were just getting along, not very well, but running a family, having children. The woman was also out working, the man was also out working. There were less issues because there was a release through work of whatever frustration they had, or they was exposed to something. But because they've been staying at home, there have also been issues, okay? And there have also been fights, and there have also been breakups happening, and there have also been a lot of violence happening, as I told you, in the COVID-19 pandemic period, during the lockdown period. But it's been, for certain families, I think we've discovered our old passions. Okay, we have time to maybe resort to painting, reading books, also connecting with friends that we hadn't connected for years together. So if you look at the positive aspect, the COVID-19 has made you reach out to certain people and also introspect within oneself. We had time to look at ourselves. We were all running. It was a race, running for money, running for jobs, running in metros, in buses, in cars. Like nobody stopped anywhere. We were unmindful of each other. Now we have the opportunity, this time to think, to stop, to realize what we want in life. It's kind of a time which has been given to us to reflect upon our own self and reflect upon our relationships with people, and also not to take each other for granted, or not to take each other for things for granted, that okay, this is my thing, this is my status, this is what I have to do in life, or this is will happen. You cannot actually predict anything after what COVID-19 has done to the entire world. Okay, nature is supreme, and we have to respect nature. We have to respect relationships. We have to respect humanity. We have to respect each other. We have to respect each other's dignity and give space to each one of us. At the same time, we have turned out to be more humble individuals and more caring individuals. And also, we've learned a lesson that when such things happen, is our country prepared, ready enough to deal with such big disasters, disasters on such a large scale? Are we ready to deal with them? Because we are a society where there is there are different people, diverse people. We have vulnerable people also. We have children. We have poor people around. We have women around who are tortured. We have people who are women who are subjected to rape, to violence. We have otherwise the disabled people. We have the mentally challenged people. So we have to see that in future, God forbid, if we have another such situation, or another, you can say, a situation kind of a pandemic, it may be in another form, we should be prepared to face such situations, so that whatever lessons we've learned now, we do not repeat them in every way. Thank you so much for the wonderful insights, ma'am, and ending this on such a positive note. It was a lovely session, and we would like to thank you once again. Thank you, Harshit sir. Thank you, participants. Thank you, Devraj, for bringing us this platform wherein I could have Manjula ma'am and Honorable Shamla ma'am, and we could have this wonderful discussion. So thank you. Thank you, Manjula ma'am, for always giving us so much of information and spreading positivity around. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, see you. Bye-bye.